Assalamu alaikum. Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Walaikum Okay. assalam. So today we'll just give concentration. This nervous system, what we have started, it is very complex. If you are understanding this motor action, then it's not that much difficult to remember the drugs which were acting on that part of the system. ठीक है, just जैसे बोल रही हूँ ना एकदम coolly you listen to it, then you will come to it, because this nervous system in your syllabus it has the according to classification. They gave the drugs according to the classification of nervous system, that is adrenergic drug, cholinergic drug, and cholinergic agonist drug. So these three classes are there. Under this three class they are having different kind of subdivisions. ठीक है, under that subdivision you are having example of drug. So this part is it look like difficult, but you are understanding the basic structure and introductory part of autonomic nervous system, then it is not that much difficult to remember the uses as well as target where this drug is acting. ठीक है, एक बार समझ में आ गया कि क्या करना है, then it is not that much difficult to write the uses of that drug. So many drugs are there, so many, because three classification: acting, direct acting, indirect acting, and mixed acting type of drugs were there. इसीलिए आपको बेसिक अगर समझ में आ गया है ना अच्छे से, देन स्ट्रक्चर और यूजेस लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ठीक है, in the last class we have started with the introductory part. In that introductory part I said that what is autonomic nervous system, how it is classified. Like, in under classification we know that the peripheral nervous system is afferent, is of two types: afferent and efferent. Afferent type is a sensory type and efferent type is a motor type. So these two systems can be controlled by the somatic system. So somatic system is nothing but voluntary actions. The voluntary action can be controlled by the somatic system. That somatic system under the control. But motor actions, what are there, that is controlled by autonomic nervous system, those are involuntary action that can be controlled by the somatic nervous system. जितना हमने देखा था, under somatic nervous system, how many parts are there, that is sympathetic and parasympathetic, we have explained. And sympathetic is acting on thoracolumbar vertebra, thoracolumbar outflow and cardiac outflow. Parasympathetic, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था. देन देन एंट्रिक नर्वस सिस्टम, तो इस ये तो हमने किया था इन द लास्ट क्लास. देन वी हैव सीन द रीजन, then how many parts are there in the cerebrum, sorry, not cerebrum, in the spinal cord, that how many bones are there. Bones are nothing but the region, and the veins which were connected to those bones are different kinds, that is 31 pairs of spinal nerves are there. So we know that the 33 bones are there. Under that 31 pair of nerves were there. So those nerves are flowing from those region of the bone in opposite direction. ठीक है, so those opposite directions, so we are targeting this part of the drug. And we know that the controlling system is a complex system. So when sensory nerves were acting, अपने पास बॉडी के अंदर sensory nerves होते पूरा, almost all part of the body, outer part of the body contain, our nails contain sensory nerves. This thing you have studied in 11th and 12th. Controlling system, ठीक है. सेंसरी नर्व रहते हैं, सेंसरी नर्व क्या करेंगे, दे फील द सेंड एंड सेंड द मैसेज टू रेगुलेटरी नर्व्स, दैट इज मोटार नर्व, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था. द मोटार नर्व क्या करेंगे, इफेक्ट, दे आर स्टार्टेड अफेक्टिंग, दे आर स्टार्ट sending the message to the spinal cord where these nerves are there, the 31 pairs of nerves, they receive message. They doesn't send message directly to the brain. Instead of sending to the brain, they start acting there only. So that action is called as fight and flight reaction. So at the moment, what kind of action can be produced, those are called as fight and flight reaction. Okay, so there the last part what we have discussed in last lecture, the last part we have discussed the cholinergic receptor and adrenergic receptor. Okay, so your classifications of drug is there according to this thing, cholinergic and adrenergic. ठीक है,
Cholinergic system is nothing but the parasympathetic system we have discussed, and adrenergic system is nothing but the sympathomimetic system. ठीक है. Adrenergic neurons, sympathetic is nothing but the sympathetic or sympathomimetic action, that is fight and flight reaction. Here the different kind of neurotransmitters are there. In that alpha 1, alpha 2 and beta adenoreceptor we have discussed. अल्फा 1 के अंदर अल्फा 1 भी होता है, अल्फा 1 बी भी होता है, अल्फा 1 डी होता है. अल्फा 2 के अंदर 3 है, अल्फा 2 ए, अल्फा 2 बी. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है. नाउ according to your university syllabus, the drugs were classified into three types, that is adrenergic drugs acting on adrenergic receptor. First is adrenergic drug, adrenergic and sympathetic neurons. That classification we have seen, the cholinergic receptor and adrenergic receptor देखा था हमने. अब हमारे ड्रग जो है दे आर एक्टिंग डायरेक्टली ऑन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर. सो दैट इज, देखो यहाँ पे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, सी योर सिलेबस. इफ यू आर सिटिंग विद सिलेबस देन हैव ए लुक ऑन योर सिलेबस. एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक एड्रिनर्जिक एक है, एड्रिनर्जिक ड्रग्स एक है, एड्रिनर्जिक ड्रग दैट इज एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, means they are direct acting drug, adrenergic agonists, direct acting drug. And adrenergic agonist के अंदर है different kind, beta agonist, alpha agonist, beta antagonist and alpha antagonist. The four subdivisions were there that we are going to discuss when we are discussing about the classification of drug. Then adrenergic acting directly, that is adrenergic drug. Then cholinergic drug, cholinergic drug. Cholinergic drugs are nothing but the parasympathetic drug, the sympathetic drug, cholinergic drugs. ठीक है. Adrenergic drug, cholinergic drug. And third part of the classification in your syllabus is mixed type of action, that is both cholinergic antagonist, adrenergic drug है, cholinergic drug है. In cholinergic system we have seen under that classification is parasympathomimetic drug, that is sympathetic action. Sympathetic action में क्या होता है? In this cholinergic drug, here rest and how to maintain the body, rest and maintain peace, rest and maintains, these are the transmitter. They are helping out to maintain the rest, repair and renewal. 3 R's: rest, repair and renewal. So this 3 action can be guarded by the cholinergic system. Cholinergic system के अंदर है nicotinic, muscarinic. So if drugs are there, we are targeting directly to the nicotinic and muscarinic receptor under cholinergic system, that is parasympathetic system. But in adrenergic system, that is fight and flight action, on prompt action के direct acting drug, directly they are acting. Our body is also having those drugs. If our body is unable to produce those neurotransmitters, fight and flight reaction, if it is not possible, then we are treating from outer sources. So those synthesized drug can be given to the patient if he is unable to proceed with the fight and flight kind of action. The pharmacological description is different, pharmaceutical chemistry description is different, but they are correlating with each other, action, reaction, adverse effect. But we are studying the molecules which were acting on those kind of system. ठीक है. So ये आपका है syllabus के अंदर, fight and ये ड्रग करेंगे act, fight और flight kind of action. ठीक है. Adrenergic, all the drugs fight and flight kind of action. If you want to motivate the person, if you want to do the work forcefully, then we are going to give this drug, fight and flight kind of drug. But other than this, our body is able to produce the neurotransmitter. If we are giving extra neurotransmitter, then extra stimulation.
ठीक है. Then cholinergic drug, rest, repair and renewal, this can be maintained by, this can be controlled by the system, ठीक है, brain and spinal cord. So autonomic और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस इतना ही है, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is having bundle of veins which were directly connected to the brain, but central nervous system contain only two parts, brain and spinal cord. The controlling system contain brain and spinal cord, but almost all the nerve can be connected to brain, that is s- uh, unsensationally controlled by the brain and spinal cord. So unsensationally controlled means that can be of two types, that is adrenergic and cholinergic. Now we'll see the first part of this one, adrenergic drug. Then we'll go forward with the कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग. ठीक है. अब आपके सिलेबस में जो है दैट इज एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ विल सी व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देखा हमने, क्लासिफिकेशन देखा हमने, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है दैट वी हैव सीन. बिकॉज ऑफ दोज न्यूरोट्रांसमीटर व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन can be produced by the body, how we are going to maintain with this with those kind of activities that we have seen. Now we'll see particularly the part of adrenergic drug, not adrenergic system. Adrenergic system is pharmacological word. Here adrenergic drugs, adrenergic drugs, हम देखेंगे adrenergic drugs, how they are acting on adrenergic receptors. So those are called as adrenergic drug. So these adrenergic drugs acting by three types according to your syllabus, also according to the book also. Three type, it is acting three types, that is indirect, direct and mixed type of acting. ठीक है. So डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्शन है, दैट इज ऑन न्यूरॉन, न्यूरॉन से सिनेप्स. सो हियर this adrenergic drug or what is adrenergic drugs, what are adrenergic drug, write the definition of adrenergic drug. Means adrenergic drugs or sympathetic nervous system is an important regulator of the activity of vital organ. So this adrenergic drug or sympathetic drugs are having capacity to regulate the एक्टिविटी ऑफ वाइटल ऑर्गन. डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट, हम लोग ड्रग पढ़ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दैट वी आर स्टडिंग द ड्रग्स विच वेर एक्टिंग ऑन sympathetic or adrenergic drug acting on vital organ, different kind of organs, such as the important organ of our body is heart. Vital organ, the anatomy physiology of heart you have studied, vital organ and vital organ 1, and another one is peripheral vasculator. Peripheral system हमको पता है, vital organ and peripheral vasculator, vascular system, peripheral vasculator. ठीक है, vasculators. So specially पेरिफेरल वेस्कुलेटर है. ठीक है भाई. स्पेशली कहाँ होता है, वी नो दैट एड्रेनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम इज having capacity to control our vital organ as well as peripheral vascular system, especially in response to stress. If the person is having stress, then this motor action will start working. ठीक है, stress, if person is feeling stress, the effect of this drug or sympathetic system, पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला, ये कंट्रोल करेगा एड्रेनर्जिक सिस्टम, वाइटल ऑर्गन स्पेशली हार्ट को कंट्रोल करेगा और पेरिफेरल वेस्कुलर को कंट्रोल करेगा, स्पेशली व्हेन पर्सन इज इन स्ट्रेस. ठीक है. नाउ वी नो दैट पर्सन इज इन स्ट्रेस, our system is controlling this two part. When the person is in stress, the sympathetic system is mediated. When he is in stress, our sympathetic system, what it will do, it mediated by release of norepinephrine.
ठीक है, mediated by release of norepinephrine, that is internal release. We are not giving drug, that is internal release when the patient is under stress. ठीक है, it can be mediated by the release of norepinephrine. From where this norepinephrine will release, they are going to release, they are release when he was in stress, they will release from where, release from the nerve terminals, they will release from the nerve terminals. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है. When the importance of drug will come. ठीक है, nerve terminals that serves to activate the adrenoreceptor. Adrenoreceptor है भाई, ठीक है, adrenoreceptor is having capacity to control, adrenergic drugs are having capacity to control the adrenergic system. Adrenergic system in the important in the sense important part like vital organ like heart, peripheral vascular system. So this can be controlled, adrenergic system is controlled. When it will control, when the person is in stress. When the person is stressed, this system will release norepinephrine. They are released from nerve terminals. ठीक है, they are released from nerve terminals that serves. nerve terminal से release हो गया भाई, करेगा क्या norepinephrine? What it will do, it will activate the adrenoreceptor. Adrenoreceptor is silent part. ठीक है, ये silent when the person is sleeping. ठीक है, something sensation of touch, or he was putting his hand on fire, or something he was touching to the body, that sensory nerves will get its sense, our adrenergic system will start working. It means that something is happening. adrenergic system, ब्रेन की बात आ गई. दूसरी बात, ब्रेन तक जाने नहीं देगा मैसेज को, ब्रेन तक जाने नहीं देगा, इधर ही कंट्रोल करेगा. कौन कंट्रोल करेगा? adrenergic system. The vital organs, these organ, agar something is happening, then the receptor will take a sense and send a message to the adrenergic system, adrenoreceptor. From, we know that from postsynaptic sites, different kind of synaptic sites are there in our body, external part of the body or internal part. When touch and sensation will take place, see, will go from downward to upward later. नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, नर्व टर्मिनल से रिलीज होगा, एक्टिवेट कर दिया एड्रेनोरिसेप्टर को. ठीक है, ऑन वेयर, एक्टिवेट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक सिस्टम, postsynaptic system, postsynaptic sites, not system, postsynaptic site. ठीक है, so पोस्ट सिनेप्टिक साइड. अब हमको पता चला द सिंपैथेटिक नर्व मीडिएटेड बाय द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया. द नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज हो गया? दैट गॉट रिलीज फ्रॉम द नर्व टर्मिनल एंड सर्व्स टू एक्टिवेट द एड्रेनोरिसेप्टर. वेयर ऑन एड्रेनोरिसेप्टर? पोस्ट सिनेप्टिक साइट. कब हो रहा है ये सब? व्हेन द पर्सन इज इन स्ट्रेस. ठीक है, also in response to varieties of stimuli, postsynaptic site, adrenoreceptor postsynaptic site से release हो गया. Then if some different kind of response, touch, feel, sensation, all this thing, also in response to varieties of stimuli, something stimulation is there, stimuli such as, अब मैंने पहले ही बोला, stress in the adrenal medulla. अब stress है, where the stress in the adrenal medulla. When the stress in adrenal medulla, the release of norepinephrine, the release of, if the stress particularly in this part, this one is norepinephrine which is released from the nerve terminal, but epinephrine is not nor नहीं. यहाँ पर adrenal medulla के पास, if the action is under with varieties of stimuli, if the stress is under adrenal medulla, the release of epinephrine. These are the drugs what we are studying in our medicinal chemistry, but these are already there in our body. Our body is able to control by different kind of neurotransmitter, different kind of nerves.
epinephrine, and it is epinephrine. If the stress in adrenal medulla, the release of epinephrine. If the stress with the body, then release of norepinephrine. Release of epinephrine, when it will get released, if it is in adrenal medulla, it is transported to the blood vessel. It is transmitted to the blood. ठीक है, blood and target tissues. Target tissue. So this action is called as flight or fight. ठीक है, ठीक है. If suddenly happening something, our body will get sensation. That sensation carries by our sensory organ, sensory touch and sensation. That sense can be transported from the blood. The blood take away the message from epinephrine to the adrenal medulla, where the stimuli are there. They're acting on postsynaptic. Then adrenoreceptor will get the action, will get the message. Then where they will start acting accordingly before sending the message to medullary organ, before sending the message to the brain. So that action is there only. मारो या मारो उधर ही हो जाएगा, वो यहाँ तक ऊपर तक जाने नहीं देगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था, in our system, in our organization, how the sensory system is working. I already said that the director sir का जो position, that is sensory system. And dean sir का जो position, that is motor system. ठीक है, motor system, we know that dean is working, but we know that the director is working on his sensory part. Sensory part, it is regulating. ठीक है, then motor part is there, that is afferent and efferent system. So that is visible. One is not visible. Which is visible, which is not visible, that is fight and flight. मरो या मारो, उधर ही उधर काम कर दो. डायरेक्टर तक सर तक जाने ही मत दो, ब्रेन तक जाने ही मत दो, उधर ही काम कर दो उसका तक, ताकि ब्रेन को पता ना चले. So that kind of reaction is called as fight or flight action. Directly transmission to blood, instead of transferring to the medulla, they are transferring to the vascular system, that is muscular system. Muscle construction only control the fight and flight action. So यहाँ तक हो गया अपना release of epinephrine and transport. So this system is fight and flight. So the drugs now will coming to the part, drugs. Drugs which mimic the action of sympathetic system are called as sympathetic drug. So this action can be mimicked by the molecules. So those are called as sympathetic drug. What are sympathetic drug and adrenergic drug? The sympathetic drug and adrenergic drugs are those which mimic the action of sympathetic system. ये पूरा system, ठीक है, the whole system can be mimicked. So this are called as sympathomimetic drugs. So this kind of drugs are called as sympathomimetic mimetic drug. ठीक है, so this kind of drugs are called as sympathomimetic drug. Like cholinergic drug, sympathetic drugs can be grouped by their mode of action or spectrum of the receptor, how it is working. So how it is working, that we'll see. That can be worked by 5 kind of mechanism. Synthesis, 5 kind of mechanism. अब आपको पता चला what is adrenergic system. Adrenergic system is controlling all these parameters, that is fight, up to fight and flight. Controlling system, fight or flight हो गया. So the drugs which is mimic this system are called as sympathomimetic drug. ठीक है, ये activity को mimic करेंगे, then those drugs were called as sympathomimetic drug or adrenergic drug. So these drug working on 5 kind of mechanism of action. 5 kind of mechanism of action में work करेंगे, हमको पता है. So ये अपना न्यूरॉन है, suppose this is a neuron. So this is a neuron. If it is a neuron, ठीक है, अगर ये अपना न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के अंदर ये है सिनेप्टिक क्लाफ्ट, ये सिनेप्स है. इस सिनेप्स है, हमको पता है ये सिनेप्स है, ये ऐसे रहेगा. मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही, जस्ट आई एम शोइंग. So these are the release of epinephrine or norepinephrine, वो यहाँ से रिलीज होगा.
फिर यहाँ से रिलीज होगा. दैट मैसेज कैन बी टारगेटेड टू द पार्ट, हमको पता है. सो दिस वन इज टारगेटेड एंड फिट द मैसेज कैन बी फिटेड इनटू द पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनैप. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनैप्टिक टारगेट टारगेट सेल्स. ठीक है. सो दिस पोस्ट सिनैप्टिक टारगेट सेल, ये है सेल्स, ये बहुत सारे ये सेल्स है. एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेल्स विच कंटेन द रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. हमको पता है ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ये. सो वी हैव सीन इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री वन द स्ट्रक्चर एंड टारगेट पार्ट ऑफ द ड्रग, वहां पे हमने पढ़ा था. सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनैप्टिक टारगेट. एंड ये हो गया अपना सिनैप, और ये हो गए अपनी न्यूरॉन जो फ्लो हो रहे हैं सिनैप के अंदर. ठीक है. सो अवर ड्रग जो अपने सिलेबस में है, दे आर ड्रग indirect acting drug. Indirect acting drug, not on the synapse, not on the postsynapse, not on the receptor, but they are acting indirectly on this kind of neuron. Indirect acting drug, three kind of mechanism. Indirect acting drug enhance the release of norepinephrine. Indirect acting क्या करेगा? Indirect acting, it enhance the release of norepinephrine. Norepinephrine is there over here in the neuron. Norepinephrine कहाँ पे रहेंगे? न्यूरॉन में है. If our synapse is unable to transfer the neuron, that time the indirect acting drug can be given to the patient. Those indirect acting drug enhance the release of norepinephrine from the vessels. ठीक है. वेजल से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे दैट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दैट न्यूरॉन. ठीक है. इफ इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द न्यूरॉन, then indirect acting drug we are going to give to the patient. Those indirect acting drug enhance and release of नॉरएपिनेफ्रिन. ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना सिलेबस के ड्रग का. कहाँ एक्ट करते हैं दैट यू नो. They are not acting directly on the synapse, they are acting indirectly to release the norepinephrine which is already stored in the neuron. Neuron के अंदर store है but आ नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा, then we are going to give the indirect acting drug. ठीक है. इनडायरेक्ट एक्टिंग के बाद आएगा अपना पार्ट डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग आर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग डायरेक्ट direct acting drug, what it will do? Direct acting drug act directly directly activities of the receptor according to the activity of receptor. इनडायरेक्टली हम उसको स्टिमुलेट करके फ्लो करने दे रहे हैं, बट डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स आर नॉट लाइक दैट. डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स विल act on not on the neurotransmitter, not on the synapse, not on the postsynaptic. The indirect acting drug act directly on the cleft where the neurotransmitter coming in fitting to the receptor according to the function they are acting. यहाँ से फ्लो नहीं करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग सीधे सीधे न्यूरोट्रांसमीटर ही दे देंगे रिसेप्टर को. ठीक है. वो फ्लो नहीं इतनी मेहनत नहीं करेंगे उन लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली दे आर एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर, दे गिव व्हाट इट नीडेड, जो इसको चाहिए वो दे देंगे. सो दैट इज द डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट आपको मैसेज ही दे देंगे कि ये है भाई, ठीक है तो ठीक हो जा. ठीक है. इतनी इतनी जहमत नहीं उठाएंगे कि इसको स्टोर जो है उसको रिलीज करके अप टू द रिसेप्टर. दे आर नॉट गोइंग टू लेट float up to the receptor the neurotransmitters, but direct acting drug does. What they do? They transfer directly according to the physiological function what is there, the neurotransmitter का physiological action जो है according to it activity, they will give norepinephrine to the receptor. वो वहां से रिलीज करके यहाँ तक आने के लिए टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे जाएंगे, तुझे जो चाहिए भाई वो ले ले. ठीक है. they will give directly the neurotransmitter to the receptor. So these kind of drugs are called as direct acting drug. ठीक है. अब पेशेंट का कंडीशन ऐसा है
Direct acting drug is also not working. Indirect acting drugs are also not working. Then what we'll do, we'll target directly on both part, that is alpha beta, both alpha and beta part. तो अल्फा एंड बीटा पार्ट जो ये फ्लो हो रहा है वहां पर भी एक्ट करेगा, और जो ये फिट हो रहा है पॉकेट में वहां पर भी एक्ट करेगा. सो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग. ठीक है, ये एक्टिंग ड्रग जो है मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग. ड्रग एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द न्यूरॉन. न्यूरॉन के ऊपर डायरेक्टली भी एक्ट करेंगे, दे आर एक्टिंग इनडायरेक्टली ऑल्सो. So they will stimulate the neurotransmitter and release the flow of stimulate the norepinephrine and release the norepinephrine, and also fit the norepinephrine to the receptor. ठीक है, ये दोनों काम करेंगे. So those kind of drugs are called as mixed acting drug. So all these action can be happen. ये दो जो भी आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन है, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, that classification working on 5 types of principles. ठीक है, 5 types of principle, that is 5 type of principle, that is storage and release of न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर भी करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज भी करेगा. सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्किंग ऑन 5 steps ऑफ फ्लो. 5 steps. ठीक है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ये कैसे काम करेंगे, दे सिंथेसाइज. ठीक है, व्हाट दे सिंथेसाइज, our body is able to synthesize the neurotransmitter, but if it is unable to synthesize, then our drug will synthesize that one जो हम दे रहे बॉडी में. they will start synthesizing. what they will do, they will synthesize the epinephrine, norepinephrine, adrenaline, dopamine, all these neurons they will synthesize. After synthesize, how it will do, they will, the synthesis is rate limiting step जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था. ठीक है, सिंथेसाइज, उसके बाद क्या करेगा, स्टोरेज. स्टोर सिंथेसिस करने के बाद they will start norepinephrine synthesize, and after synthesis it is storage. सिंथेसिस होने के बाद स्टोर होगा, वेयर इट विल गेट स्टोर इन द वेजल्स लाइक डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, all these things will get degraded in the vascular system. सिंथेसिस होगा, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, देन आफ्टर स्टोरेज इट विल गेट रिलीज. ठीक है, इट विल गेट रिलीज. देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग, सिंथेसाइज किया न्यूरोट्रांसमीटर को, स्टोर किया यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को, रिलीज किया एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन, डोपामाइन, दैट कैन बी रिलीज. when it will get release, the release of this step is called as release of neurotransmitter. When this release of neurotransmitter will happen, then they will start flowing towards the binding pocket. Now here they will bind to the pocket, binding to receptor pocket, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर पॉकेट. व्हेन इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर पॉकेट, यहाँ पर जो बाइंड होगा अपना ड्रग, व्हेन इट विल ड्रग और न्यूरोट्रांसमीटर वट एवर वी आर गोइंग टू गिव, दैट इज एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालाइन, डोपामाइन, जो भी एर्गोटामाइन, जो भी हम मिक्स्ड एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग दे रहे हैं, they will do all these 5 steps of action: synthesis, storage, release, and bind to the binding receptor. After binding, रिमोल. बाइंड होने के बाद बाइंड होके उधर ही नहीं बैठेगा. ठीक है, रिमोल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. आफ्टर एक्शन इट विल गेट रिमूव्ड. देखो फाइट एंड फ्लाइट हो गया, वो मरने तक तो फाइट एंड फ्लाइट नहीं करेगा, देन ही विल गेट रिलैक्स आफ्टर सम टाइम, बिकॉज 2 systems आर वर्किंग पैरेलली इन आवर बॉडी, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों वर्क कर रहे हैं. एक वर्क कर रहा है फाइट एंड फ्लाइट बिकॉज इट इज नीडेड. व्हेन इट इज वर्किंग, after some time it will get relax, that is 3R, repair, relax and restore हो जाएगा. After some time it will get restore. When it will get restore, when the
formed neurotransmitter removed from the binding site, removal of नॉरएफिनेफ्रिन अब यहाँ से रिमूव हो गया. आफ्टर रिमूवल, रिमूवल होके किधर जाएगा? मेटाबोलाइज. इट विल गेट मेटाबोलाइज. रिमूवल होने के बाद मेटाबोलाइज होगा. व्हेन इट विल गेट मेटाबोलाइज, ऑक्सीडाइज, मेटाबॉलिज्म, oxidation, oxidation and release from the urine, release from the urine. That action can be guarded by the kidney. देखो इतना सब होने के बाद that will get released from the urine, then the person will feel relaxed. तो हो गया भाई, सब काम खत्म हो गया, मेरा एड्रेनलाइन, नॉर एड्रेनलाइन, डोपामाइन जो भी था मेटाबोलाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, रिलीज हो गया. दिस इज द फंक्शन ऑफ द, इफ समथिंग इज एंटरिंग इनटू द बॉडी, our system is indirectly working. We don't know that it is working, but at the moment when it is needed to the body to protect ourselves, the system is working. How it is working? It is working by transformation of this different kind of neurotransmitter that will takes the of sense of accident, sense of fighting, sense of working, sense of touching, sense of feel, sense of sensation. ये जो भी हो रहा है ना, that is our autonomic nervous system controlled by a afferent system, that is motor system. Efferent system, controlling system, that is brain and spinal cord. अफेरेंट ए जो रहेगा कंट्रोल करेगा, ई जो रहेगा वो मोटार का फंक्शन करेगा. ठीक है. सो दिस टू सिस्टम. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट, मिक्स्ड एंड डायरेक्ट, एंड 5 steps of reaction, that is synthesis, storage and release of the metabolism. When it will get metabolized, it will get released from the urine. So this is 5 step process that can be followed by our system. तो ये हो गया अपना फंक्शन. ये कैसे वर्क करेगा? ठीक है. आफ्टर फंक्शन, एक So, so these are the action which can be controlled by our system. अब फंक्शन भी हो गया, हमको पता चला कि कहाँ कहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, हाउ इट विल वर्क, व्हाट हाउ इट विल वर्क एंड व्हाट इट विल डू. अब हम बात करते हैं द पार्ट वेयर इट इज वर्किंग. स्क्रीन विजिबल है मेरा? स्क्रीन विजिबल है ना? सो नाउ द अड्रीनो रिसेप्टर वर्किंग ऑन, हमको पता चला कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड mixed type of action. Now we'll see the drugs according to your syllabus, classification of drug. ठीक है. So classification of drug, we are focusing on adrenoreceptor, adrenergic receptor, not cholinergic drug. ठीक है. हम लोग देख रहे हैं एड्रीनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग तक अभी पहुंचे नहीं हम लोग, दैट इज डिफरेंट मैटर. एड्रीनर्जिक पार्ट, द एड्रीनर्जिक parts are class part of drug are classified into 2 types, that is adrenergic agonist or direct acting drug. Then second part is adrenergic antagonist, that is indirectly working. Adrenergic antagonist. मेरी एक छोटी सी बात याद रखना आप लोग, इट विल हेल्प यू होल लाइफ. If you are understanding your motor function, how the neurotransmitters are getting released, how the message is conveying to the brain, in what form the sense organs were working, अगर आपको इतना पता चला, then you can very easily understand the central nervous system, that is under control. हम लोगों ने देखा the disorder, how we are going to treat the disorder associated with that person. If the person is having different kind of disorder, if it is differentiation in the activity, differentiation in the thinking power, differentiation in the walking, sleeping,
all those things are associated with the central nervous system. ठीक है, so that will give you the nature of the person, how the person is. You can understand the nature of the person. If you understand the nature of the person, you control your motor organs. ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत कीमती है अंडर मेडिसिनल केमिस्ट्री. अगर आपको सामने वाला जो है समझ में आ रहा है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, डोंट फाइट एंड फ्लाइट विद दैट पर्सन, यू कंट्रोल योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैट वन, देन इट इज वेरी short and short that we have to treat that one with the drugs. So this all this thing can be done by a healthy person. If he is not healthy, then he is coming to the part of medicinal chemistry. ठीक है, adrenergic agonist and adrenergic antagonist. नाउ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो है. एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर अल्फा रिसेप्टार भी है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर बीटा रिसेप्टार भी है. देन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर अल्फा एंड बीटा बोथ द रिसेप्टार्स आर देयर. if the drug is acting directly, then acting on alpha receptor, indirectly on beta receptor, mixed type of actions are called as the drugs which were acting on alpha and beta both the receptor at the same time. Similarly, the agonist direct acting drug that acting directly on the synapse, the synthesis of neurotransmitter can be takes place by this type kind of adrenergic agonist drug. If it is adrenergic antagonist, they are working indirectly. These are direct acting. They are acting directly according to the function. They are direct give the message to the receptor. They fit the neurotransmitter what is required to the receptor, the direct acting drug. Indirect, then production of neurotransmitter can be takes place indirectly. ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा. हियर ऑल्सो अल्फा रिसेप्टर, हियर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, अल्फा एंटागोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट, and mixed type of alpha and beta both antagonist, mixed type of action. So ये दो adrenergic agonist antagonist के अंदर दोनों रहेंगे. In your syllabus adrenergic agonist drugs are there, alpha receptor agonist, beta receptor agonist, alpha receptor antagonist, beta receptor antagonist. The mixed type of drugs were there. Now we'll classify this thing adrenergic receptor and adrenergic uh, agonist and antagonist. Now एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी सिलेबस एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्टिंग. हमको पता है डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, सीधा सीधा मैसेज दे देता है, कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं करता अपना ड्रग. डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग ऑन द सिनैप. These drugs will give mixed type of action, production of epinephrine, norepinephrine, dopamine, or giving the norepinephrine or transport flow of norepinephrine directly fitting to the pocket. Both mixed type of acting drug. Mixed type of acting drug के अंदर वो ड्रग आएंगे जो सारे एक्टिंग ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 both the receptor. Release of releasing agent alpha beta, all this kind of releasing agent. So these are the class of drug which is natural source of drug. Both action दे रहा है मतलब those drugs are from the natural sources, not from the synthetic sources. ठीक है, so those are ephedrine alkaloids, ephedrine, norepinephrine, pseudoephedrine. So these are the drugs which are there in your syllabus. Pseudoephedrine, norepinephrine, pseudoephedrine, all this the derivatives of ephedrine, mixed type of acting drug. Alpha, alpha 2, beta, beta 2. याद रखना. यूजेस डायरेक्ट एक्टिंग मिक्स. यूजेस अगर आपको लिखना है एफेड्रिन का स्ट्रक्चर और केमिकल यूज के साथ में, केमिकल नेम के साथ में यूज लिखना है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्टिंग ड्रग्स आर एफेड्रिन क्लास ऑफ. कहाँ भी ड्रीन 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 आ रहा है, दैट इज नेचुरल सोर्सेज आइसोलेटेड फ्रॉम द अल्कोलाइड्स, दैट इज एफेड्रिन काइंड ऑफ अल्कोलाइड्स. ठीक है, so these are the alkaloids, mixed type of action. Direct acting drugs are only two which were there in your syllabus, only two, but so many
from that class, that is phenyl phenylephrine, phenylephrine, clonidine, phenylephrine, clonidine, methyl dopa, that is release of dopamine can be carried by methyl dopa, dopamine direct receptor को dopamine देगा methyl dopa. Then so many drugs are there, or two or three we are going to direct acting phenylephrine, clonidine and methyl dopa. So these are the three drug. अगर classification है adrenergic agonist का ऐसे लिख दो आप, adrenal direct acting drug, mixed type of acting drug. Under direct acting drug, phenylephrine, methyl, the derivative of phenylephrine, derivative of clonidine, derivative of methyl dopa. Mixed acting drug acting on almost all the receptor alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and the drugs which were acting on this is ephedrine and pseudoephedrine. Then indirect acting drug, not direct, indirect. Indirect means direct acting on the neuron, the cleft of the neuron. If indirect acting drug अगर indirectly act कर रहा है, then so many classifications are there. So many classification means four kind of classification are there. So here you are having releasing agent, because we have saw the a diagram of our synapse. First it will activate and release. Releasing agent, the drugs which will release, those are amphetamine, the derivative of amphetamine. Releasing agent, releasing of the neurotransmitter, releasing of norepinephrine, those are indirect acting drug, not direct acting drug. Releasing agent, that is amphetamine. Then uptake, that is storage, reuptake, uptake or inhibitor, try to inhibit that one. So that is cocaine alkaloids, indirect acting drug. Releasing agent, uptake drug, that is uptake and inhibitor, inhibition of the neurotransmitter from the storage cells, release, inhibit. Then monoamino oxidase inhibitor acting on monoamino oxidase inhibitor, ये हम लोगों ने देखा था ड्रग सेलिग्लिन. देन comet inhibitor, comet inhibitor. Comet inhibitors, different kind of comet inhibitors are there, but any kind of example of drug is not there in your syllabus. तो अब adrenergic receptor के drug को classify करना एग्जाम में आया. If you got the question in examination, classify the adrenergic agonist drug. See there, agonist is there or antagonist is there. Agonist drugs are different, antagonist drugs are different. Keep in mind, make sure that if it is agonist or antagonist. If it is agonist, एंटागोनिस्ट के अंदर भी तीन क्लासिफिकेशन है, एगोनिस्ट के अंदर भी तीन क्लासिफिकेशन है, ये याद रखना. अंडर एगोनिस्ट यू आर हैविंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड मिक्स्ड. अंडर एंटागोनिस्ट ऑल्सो यू आर हैविंग टू क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंटली बट अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर. बट एगोनिस्ट के अंदर, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड मिक्स्ड काइंड ऑफ एक्शन. तो डायरेक्ट के अंदर ये ड्रग है, इनडायरेक्ट के अंदर ये अल्कोलाइड है, indirect के अंदर ये अल्कोलाइड है, and mixed के अंदर so ephedrine class of drugs are there. This is about the adrenergic agonist drug. Now we'll see adrenergic agonist. हम लोग adrenergic से start हो गए. Adrenergic, classify the drugs involved in adrenergic antagonist. Classified adrenergic antagonist आ गया भैया आपके पास अब. Adrenergic antagonist, classify the drugs which are there in adrenergic antagonist, not agonist. Against, antagonist, against. If it is adrenergic antagonist, then it is classified, agonists are classified into three types, antagonists are classified into two types, that is alpha receptor antagonist, and we know only two receptors are there, beta receptor एंटागोनिस्ट, ठीक है. अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अंडर अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटागोनिस्ट, नॉट एगोनिस्ट. बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, it is
non-selective, sorry I'm लिख रहा हूँ, non-selective drug. Then here alpha selective, here alpha 2 selective drug acting on alpha receptor, alpha 1 and alpha 2 receptor, and non selective drug, that is indirect acting drug. Direct acting alpha and alpha 2 पे direct act करेंगे. Indirect acting non selective drug. The non selective drugs are synthetic drug, that is derivatives of all the derivative phenoxybenzene, derivatives of all phenoxybenzene. Then पूरे ड्रग नहीं दे रही मैं, what are there in the syllabus, I'm not giving almost all the drug, write only one, then after that you write all the derivative associated with that drug. Then alpha selective, the drugs which are belonging to tolozoline, tolozoline, tolozoline बस एक ही काफी है याद रखने के लिए. Then alpha 2 selective, no examples are there in your syllabus, so no need to write almost all the drugs which were associated with the alpha 2 selective. Adrenergic antagonists are classified into two types: alpha receptor antagonist, beta receptor antagonist. Beta receptor antagonist is further subclassified into फोर टाइप्स. ठीक है, ये थ्री टाइप्स: नॉन सेलेक्टिव, अल्फा सेलेक्टिव, अल्फा टू सेलेक्टिव. बीटा रिसेप्टर हियर आल्सो नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव. ठीक है भाई, नॉन सेलेक्टिव बट इट इज फर्स्ट जनरेशन. नॉन सेलेक्टिव ड्रग बट इट इज फर्स्ट जनरेशन ड्रग. First generation drugs are belonging to the category of timolol, first generation drug. Non selective, first generation drug. Then beta 2 selective. So here also, here we are having second generation. Time to time different drugs got synthesized. First generation drugs are timolol, sotalol, pronolol, all lol kind of drugs are first generation drug. Another एटिनोलॉल, टीनोलॉल जो भी आएगा वो सेकेंड जनरेशन. एटिनोलॉल, लॉल जो आएगा फर्स्ट जनरेशन. एटिनोलॉल, एटिनोलॉल, देन एस्टिमोलॉल, एसिटोब्यूटॉल, all are second generation drug, beta selective drug. Then non selective third generation. ठीक है, नॉन सेलेक्टिव थर्ड जनरेशन आर लेबिटलॉल. The drugs comes under the category of labetalol. Non selective first generation, non selective third generation, beta 2 selective second generation, and beta 2 selective third generation. Beta T selective third generation. So any kind of drug under these categories are not there in your syllabus. So this is the classification of drug associated with the adrenergic antagonist. अब हम लोग ये सारे ड्रग पढ़ेंगे. So alpha drugs देखो. So all these drugs we are going to study, and till now we know that the classification of autonomic nervous system, how the autonomic nervous system is working, where the drugs are acting directly or acting indirectly or mixed type of action on our neuron to activate the neurotransmitter. ठीक है, to produce fight and flight reaction or to produce rest, repair and rejoice. All this action can be done by our body. If not unable to do, then we are going to give all this kind of drug. अब अल्फा रिसेप्टर जो भी है, they take care of vasoconstriction, increase peripheral resistance, increase blood pressure, increase और decrease कैसे होगा, midriatic देखना, all acting on muscles of the eye.
the vasoconstriction, muscles of the alpha receptor acting on muscles of the eye. Alpha 2 receptor, what it will do? It inhibit the norepinephrine, release of norepinephrine, inhibition of acetylcholine, release of noracetylcholine, inhibition of insulin, and release of insulin. So that can be done by alpha 2 receptor. अल्फा टू इंसुलिन का काम, इंसुलिन को रिलीज और इनहिबिट करेगा. अल्फा वन was eye muscles of the eye, that is vasoconstriction, contraction of smooth muscles, vasoconstriction, all vasoconstriction. Actually the release of insulin alpha 2, but release of epinephrine, norepinephrine and dopamine can be done by the smooth muscles. ठीक है, स्मूथ मसल हो गया अल्फा टू. बट बीटा एंड बीटा टू, बीटा क्या करेगा? अपने पास बीटा के पास एगोनिस्ट, हियर आल्सो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, and beta also agonist and antagonist. The beta 2 receptor take care of the muscles like tachycardia, that is heart muscle, increase lipolysis, tachycardia. Beta 1 receptor can be control the heart muscles, the muscular system, that is tachycardia, increase lipolysis, increase myocardial contraction, increase and release of renin. ठीक है, so this is controlled, this smooth muscles were controlled by beta receptor. ठीक है, now beta 1 receptor, beta 2 receptor क्या करेगा? Same function what is carrying by alpha 1 receptor, that can be controlled, oppositely controlled by beta 2 receptor. alpha 1 में वासो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट बीटा 2 में क्या? अल्फा 1 में वासो कंस्ट्रक्शन, मैंने अभी बोला कि अपोजिट एक्शन. अल्फा 1 के जो है वो बीटा 2 के अपोजिट एक्शन है. यहाँ पे अल्फा 1 में जब वासो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिलीज ऑफ, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, बीटा 2 में क्या होगा? वासो डायलेटेशन होगा. all opposite action, vasodilation, increased peripheral release of norepinephrine. Here क्या, यहाँ पे जब increase हो रहा है तो यहाँ पे decrease होगा, decrease of peripheral resistance, bronchodilation, then increase muscle contraction. Here increase blood flow, but here increase muscle contraction, increase release of glucagon, and relaxation of urinary smooth muscles. रिलैक्सेशन. हमने बोला 5 सिस्टम पे अपने न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करेंगे. डायरेक्टली एक्टिंग, ऑल दीज एक्शन आफ्टर मेटाबॉलिज्म directly acting on kidney, and then they can flow in the form of urine. Relaxation of uterine muscles, यूट्राइन मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स. ठीक है, कितना अच्छा सिस्टम अपना बॉडी का है जो अल्लाह ताला ने बना, व्हाट गॉड हैज मेड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हाउ, व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? ऑल दीज एक्शंस आर कैरिंग without interacting with each other, but they are following their action according, they are not disturbing to any other part. ठीक है, जब बीटा है, जब ये सीधे सीधे काम कर रहा है अल्फा 1, तो उसका अपोजिट काम करेगा बीटा 2. जब ये अपोजिट काम करेगा, मेटाबोलाइज एंड रिलीज ऑफ द प्रोड्यूस्ड एक्शन, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग रिलीज किए थे, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, they got fitted into the pocket. After production of action, they'll release from the pocket. They are not going to fit there only. अगर उधर ही रहेगा तो इंसान पागल की तरह काम करेगा. ठीक है, वो फाइट एंड फ्लाइट ही करता रहेगा, दूसरा कुछ काम ही नहीं करेगा. ठीक है, सो that can, if that has to be released, if it is fitted, then it has to be released. When it will get released, where it will go? It will get metabolized, and when it will get metabolized, then oxidize. After oxidation, it will get released, it will get released from the kidney, that contraction of uterine smooth muscle and release of those produced neurotransmitter in the form of urine. ठीक है, so this is about our system of drug working. ठीक है, next we'll see our classes of drug. तो सारे drug के structure, uses and synthesis. In the next class we'll see the synthesis. ठीक है, uses and सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर. जब अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही दिस न्यूरोट्रांसमीटर, दिस केमिकल्स वे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम आवर बॉडी, हाउ वी आर गोइंग टू गिव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस स्ट्रक्चर, केमिकल नेम,
uses, all these things we are going to study in our next class. So it is too much now. अब अच्छे से याद रखना, conclusion to be concluded, this thing, conclusion is this much कि अपनी बॉडी सिस्टम दो पार्ट में है, एक कंट्रोलेबल है, एक अनकंट्रोलेबल है. सो जो अनकंट्रोलेबल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स आर देयर विच आर कनेक्टेड टू द कंट्रोलिंग सिस्टम. सो जो कनेक्शन अपना नर्व का है दैट कैन बी कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन टू वे, दैट इज एफेरेंट वे एंड इफेरेंट वे. सो ये जो कंट्रोल कर रहा है, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, अल्फा ट्रांसमीटर, बीटा ट्रांसमीटर, that is cholinergic and adrenergic drug. cholinergic system adrenergic system दो है uncontrolled motor control के अंदर. the cholinergic and adrenergic can be guarded, different organ can be controlled by this cholinergic and adrenergic system. तो अपने drug acting on adrenergic and cholinergic receptor in two way, डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे. अब हम देखेंगे ये ड्रग के स्ट्रक्चर, यूजेस एंड केमिकल नेम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अंडरस्टूड? आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट्स, हाउ आवर ड्रग इज वर्किंग. ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. यू गॉट इट? यू आर हैविंग एनी डाउट? हेलो, shall I end up my session now? I think I have done with the introductory part full. कुछ नहीं छोड़ा मैंने. In the next class we'll see the drugs synthesis. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So whenever sitting in my class, I'm not, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी कि आप ऐसे ही करो, आप असाइनमेंट लिखो. When you are sitting, ईमानदारी से आप पेन और नोटबुक लेकर बैठो. दैट विल हेल्प यू टू लर्न हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू राइट द केमिकल नेम. अगर आप मेरे साथ में सीखेंगे, देन इट, व्हेन यू आर स्टडिंग अलोन, इट विल हेल्प यू how to write the structure and how to write the chemical name of that drug. But because in medicinal chemistry this thing is only important, so ये जो मैंने theory बोला, that is important to remember the uses, to write the uses of that drug. ठीक है? So shall I end up my session? I think no doubt. If you are having doubt, you are having my number, then message me. I will clarify your doubts on WhatsApp, on any way you are coming. ठीक है? Should I end up my session? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Yes, ma'am. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय. Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज.